students. Today we are going to start the next topic, that is chemistry of actinides. So here we will start with actinides. So first of all understand what are actinides. ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किए थे लैंथेनाइड्स डिस्कस किए थे, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिनाइड्स. सो पीरियोडिक टेबल में अगर देखें, पीरियोडिक टेबल में जो एंड में दो सीरीज दे रखी हैं, एक सीरीज जो है वो 4f है, 4f में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं एक सीरीज में, दूसरी जो सीरीज है उसमें 5f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं. जो 4f वाली जो सीरीज थी उसमें 14 एलिमेंट्स जो वो आते हैं और उन 14 एलिमेंट्स को हमने क्या नाम दिया था, लैंथेनाइड्स. And in actinides we have further 14 elements and these 14 elements are known as actinides. So what are actinides? These are the elements in which the electron enters into 5f subshell. So ऐसे elements जिनमें last electron enter करता है 5f subshell में, ऐसे elements को क्या बोलते हैं, actinides. So these actinides will start from actinium to lawrencium. The atomic number of actinium is 90 and atomic number of lawrencium is 103. So the elements which will start from actinium and end with lawrencium, these elements are known as actinides and the electrons will enter into 5f subshell. ठीक है, so 5f subshell में जिनके केस में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है उनको क्या बोलेंगे हम, actinides. As far as the general characteristics are concerned, first of all we have electronic configuration. Nearest noble gas is radon. Electrons, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे यहाँ पे, 86. Then the electron is added into 5s subshell. So that is why they are named as what, actinides. So 5f subshell में इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें एक्टिनाइड्स की, रेडॉन 86 हो गया, 5f 1 to 14, 5f 1 to 14, 6d 0 to 1 and 7s 2. This is the general electronic configuration applicable in case of actinides. As far as the ionization enthalpy is concerned, as far as the ionization energy is concerned, so first of all understand what is ionization energy. The minimum amount of energy which is required to remove the most loosely bonded electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. आइसोलेटेड गैसियस एटम का अगर यहाँ पे मीनिंग देखें तो आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या होता है, एक ऐसा एटम जिसके सराउंडिंग में कोई और एटम्स वो प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, अगर और सराउंडिंग में कोई एटम्स प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है या फिर इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, उसके केस में मिनिमम होंगी, नेग्लिजिबल होंगी. ठीक है, सो the ionization energy, as far as the ionization energy of actinides is concerned, the ionization energy is not very correctly or accurately known. ठीक है, जो actinides हैं इनके केस में जो ionization energy है वो accurately known नहीं है, बट अगर हम कंपैरिजन करें किसके साथ, लैंथेनाइड के साथ अगर कंपैरिजन करें, then they will have lower ionization energy as compared to lanthanides. We have studied a general trend in the periodic table. Top to bottom अगर हम मूव करते हैं तो ionization energy कैसे वेरी करती है, डिक्रीज करती है. And why it will decrease? Due to increase in what? Due to increase in atomic size. ठीक है, अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, वीकर होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाता है, इजियर हो जाता है. ठीक है, सो द आयनेशन एनर्जी ऑफ एक्टिनाइड्स आर नॉट एक्यूरेटली नोन, बट एज फार एज द आयनेशन एनर्जी इज कंपेयर्ड विद द लैंथेनाइड्स, दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, इनके केस में क्या होगी, लो आयनेशन एनर्जी होगी एज कंपेयर टू lanthanides. So out of lanthanides and actinides which are having greater ionization energy, lanthanides के केस में greater ionization energy है as compared to actinides, और किन के केस में कम ionization energy है, actinides will have lower ionization energy as compared to what, lanthanides. And what is the reason? Reason due to increase in the atomic rate and due to increase in the shielding effect of the 4f
and 5f subshell. So due to increase in the shielding effect of 4f and 5f subshells, the hold of the nucleus, the hold of the nucleus will be weaker. Will be weaker. Removal of electron will be easier. And removal of electron will be easier. See, एक तो इफेक्ट आ जाता है यहाँ पे कौन सा, शील्डिंग इफेक्ट. सो जो 4f और 5f सबशेल है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्या होता है, ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है. ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन तक न्यूक्लियर चार्ज जो वो इतना नहीं पहुंच पाता. ठीक है, तो उसकी वजह से ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो outermost electrons हैं, they will feel lesser pull from the nuclear side and hence it will be easier to remove those electrons. ठीक है, so on the basis of shielding effect you can explain, on the basis of shielding effect these actinides will have lower ionization energy as compared to the other elements. So as far as next characteristic is concerned, next characteristic is oxidation state, and the actinides can exhibit +2, +3, +4, +5, +6 and +7 oxidation states, +7 oxidation states, but most common oxidation state is +3. जिस तरह से लैंथेनाइड्स के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वैसे ही एक्टिनाइड्स के केस में भी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट विल बी +3. सो दे विल form compounds in +3 oxidation state. Most common oxidation state which is exhibited by these actinides will be +3, but they can show oxidation state +2, +3, +4, +5, +6 and +7. So +7 तक की oxidation state भी इनके केस में क्या हो सकती है, exhibit हो सकती है, but जो most common oxidation state है that will be what? That will be +3 oxidation state. So they will form compounds in +3 oxidation state. Most of the compounds will be there in +3 oxidation state. So next characteristic is ionic radii and actinide contraction. So see, we have studied general trend that as we will move from left to right among the actinides, then what will happen? The atomic radii will decrease. This steady decrease in the ionic radii or atomic radii of actinides with increase in atomic number is known as actinide contraction. इसको क्या बोलते हैं? actinide contraction. ठीक है, so how will you define actinide contraction? The decrease in ionic radii or atomic radii of the actinides with increase in atomic number is known as actinide contraction. This steady decrease is known as actinide contraction. And what is the reason why this steady decrease is observed? See, we have studied general trend. As we will move left to right, then what will happen? Atomic and ionic radii, atomic size will decrease. ठीक है, atomic size जो है decrease करता है, but there is a steady decrease. Means ना तो abrupt decrease है, किस तरह का decrease है? Steady decrease है. ठीक है, so this steady decrease is known as actinide contraction. And what is the cause of this actinide contraction? The reason for this actinide contraction is the shielding effect of 5f electrons. The electrons which are present in 5f subshell में या 5f जो orbitals present है उनमें जो electrons present है उनका किस तरह का effect है? There will be greater shielding effect. इस shielding effect की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है
जो न्यूक्लियर चार्ज है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक उतना नहीं पहुंच पाता है। उसका रीजन क्या है, बीच में कौन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 5f के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो ज्यादा जो है न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर लेते हैं, उसकी वजह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। अब जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, न्यूक्लियस ही तो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, बट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, वीक हो गई। रीजन 5f के इलेक्ट्रॉन्स आ गए बीच में, उसकी वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, वीक हो रही है। कंसिक्वेंस क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना क्या हो जाएगा, इजियर हो जाएगा। सी, और इसकी वजह से जो डिक्रीज होता है, दिस डिक्रीज इज नोन एज व्हाट, दिस डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज नोन एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। डिक्रीज तो हो ही रहा है एटॉमिक साइज, बट ये जो डिक्रीज है ये किस तरह का डिक्रीज है, स्मॉल डिक्रीज है, स्टेडी डिक्रीज है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, अब ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तब भी एटॉमिक साइज उतना प्रोपोर्शन में जो डिक्रीज नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या आ गया यहाँ पे, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो है वो एक्टिनाइड्स का साइज जो है वो उतना डिक्रीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज इनके केस में जो ऑब्जर्व होता है दैट इज स्टेडी डिक्रीज, एंड दिस स्टेडी डिक्रीज इज नोन एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इस स्टेडी डिक्रीज को क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सी वही आ जाएंगे जो हमने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के केस में स्टडी किए थे, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, और उसकी वजह से क्या होगा, अब स्टेडी डिक्रीज है तो उसकी वजह से जो एलिमेंट्स हैं दे विल रिजेंबल इन देयर व्हाट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एंड देयर सेपरेशन विल बी डिफिकल्ट, ठीक है। अब जो भी एलिमेंट्स है उनका जो साइज है वो क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। तो उनकी जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया वो भी क्या ऑलमोस्ट सेम है, तो इस वजह से उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, सो देयर सेपरेशन विल बी डिफिकल्ट। एंड अनदर थिंग विच कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट इज due to resemblance in the size or due to resemblance in the atomic size, then there will be difficulty in separation of these elements, ठीक है। अगर एलिमेंट्स जो रिजेंबल कर रहे हैं साइज में तो उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना जो डिफिकल्ट है, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जैसी ही प्रॉपर्टीज जो वो शो करेगा, सो उनकी सेपरेशन जो डिफिकल्ट है, उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना जो डिफिकल्ट है, ठीक है। सो दीज आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्टिनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन। सो मेन रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे, शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हो या फिर आपके पास कंट्रैक्शन हो, किसके बेसिस पे आप एक्सप्लेन करोगे, शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट किस तरह का होगा यहाँ पे, ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक नेचर। सो एज फार एज the magnetic nature of actinides is concerned, they are paramagnetic in nature. They are paramagnetic. They are paramagnetic in nature. And why they are paramagnetic in nature? Due to the presence of unpaired electrons. Due to the presence of unpaired electrons, the actinides are paramagnetic in nature, ठीक है। So unpaired electrons होने की वजह से जो actinides हैं, these are paramagnetic in nature. So ये तो हो गया मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो इनके केस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट जो वो फाइंड आउट किया जा सकता है इनके केस में, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटो, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो वो फाइंड आउट किया जा सकता है इनके केस में। सो मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटो, ठीक है। सो ये तो है इनका मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर में क्या स्टडी की हमने, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर मींस दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें, देन दे विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स
ठीक है, colored compounds formation, colored compound formation. So most of their compounds will be colored and the reason will be FF transition. ठीक है, क्या रीजन आ जाएगा यहाँ पे? FF ट्रांजिशन. FF ट्रांजिशन होने की वजह से इनके जो कंपाउंड्स होंगे वो किस तरह के होंगे? कलर्ड होंगे. ठीक है, सो जिस तरह से हमने DD ट्रांजिशन स्टडी की है वैसे ही FF ट्रांजिशंस होती हैं. लोअर F ऑर्बिटल से हायर F ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? जंप कर सकते हैं. दीज ट्रांजिशंस आर नोन एज FF ट्रांजिशंस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द कलर इन द कॉम्प्लेक्सेस और कंपाउंड्स. और जो प्रॉपर्टी इनके केस में आ जाती है दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. Complex formation, and these compounds will have the ability to form complex compounds. And as far as their comparison is concerned with the lanthanides, so the actinides will have greater tendency. They have greater tendency to form complexes. And what is the reason why they have greater tendency to form complexes? Here I am mentioning small size. Small size आ जाएगा एक तो कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा हाई चार्ज. ठीक है, we have studied जो actinides हैं वो वेरियस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. बहुत ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनके केस में जो वो एग्जिबिट हो सकती है. तो हाई चार्ज होने की वजह से, स्मॉल साइज होने की वजह से दे हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू व्हाट? लैंथेनाइड्स. ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया, कलर्ड कंपाउंड्स का हो गया, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का भी हो गया. ठीक है, दे हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज. ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनाइड्स. बाकी स्टूडेंट्स इसके बाद आ जाते हैं इनके यूजेस. तो आप लैंथेनाइड्स के भी और एक्टिनाइड्स के भी यूजेस जो वो लिख सकते हैं. एक्टिनाइड्स हमारे पास जैसे यूरेनियम है तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो वो यूरेनियम यूज होता है. थोरियम है या फिर यूरेनियम के डिफरेंट सोल्ट्स हैं तो वो यूज किए जाते हैं. जैसे ग्लास को भी अगर ग्रीन कलर इंपार्ट करना है तो उसमें यूरेनियम के सोल्ट जो वो यूज होते हैं. सो यू कैन राइट द वेरियस यूजेस ऑफ व्हाट? दीज लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. ठीक है, एक्टिनाइड्स में जैसे आपके पास थोरियम हो गया. न्यूक्लियर रिएक्टर में जो डिफरेंट रोड्स यूज की जाती हैं तो उनको बनाने के लिए जो थोरियम का यूज जो वो किया जाता है. सो देयर आर वेरियस यूजेस एसोसिएटेड विद द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. सो you can study the comparative account of lanthanides with actinides. ठीक है, comparative account आप लिखोगे lanthanides और actinides का. ठीक है, दोनों मैंने आपको करवा दिए, lanthanides पे करवा दिए और actinides पे करवा दिए. And thereafter you will write the what uses of actinides. What are various uses of actinides? So students, in this video we are going to study the comparison of lanthanides and actinides and the differences between the similarity and differences between lanthanides and actinides. So first of all, comparison of lanthanides and actinides. Points of similarity: both show +3 oxidation state. In both the cases, f orbitals of n-2 shell are progressively filled up. A contraction in atomic and ionic size is observed in both the cases, lanthanides and actinides. In case of lanthanides, this is known as lanthanide contraction, while in case of actinides, this is known as actinide contraction. Both lanthanides and actinides show sharp line-like absorption spectrum due to FF transitions. They have low electronegativity values. These elements are quite reactive. These elements form colored ions. The nitrates, perchlorates, sulfates in the +3 oxidation states are soluble in water. Their hydroxides and carbonates in +3 oxidation state are insoluble in water. Members of both the series show an ion exchange behavior due to similarity in their atomic and ionic radii.
So these are the point of similarities between the lanthanides and actinides. The next is the differences between lanthanides and actinides. So first of all, lanthanides, they have identical chemical properties. Among the lanthanides, they have identical chemical properties, while there is some variation observed in case of actinides. Lanthanides have high binding energy, while the binding energy of actinides is small. These elements exhibit oxidation state up to +4. The oxidation state in case of lanthanide is +4, while the actinides can exhibit maximum +7 oxidation state. In case of lanthanides, the 4f electrons have better shielding effect, while in case of actinides, 5f electrons have poor shielding effect. The paramagnetic properties of the lanthanides can be easily explained, while the magnetic properties of actinides are quite complex. The lanthanides hardly form complexes, while the actinides usually form complexes. They can form complexes easily. Except promethium, all are non-radioactive. Among the lanthanides, only promethium is radioactive, while among the actinides, all the actinides are radioactive elements. The lanthanide compounds are less basic. The compounds which are formed by actinides are more basic. And as far as the paramagnetic character is concerned, the lanthanides are paramagnetic and their paramagnetic properties can be explained easily, while the actinides are also paramagnetic but their magnetic properties cannot be explained easily. So these are points of differences between the lanthanides and actinides.